Good morning, students. In today's session, we will learn a little about tenses. आज हम tenses के बारे में कुछ सीखेंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं, tenses 3 प्रकार के होते हैं: present, past and future. As you all know, tenses are of 3 types: the present tense, past tense and future. Tenses is all about how we use the verb. टेंसेस किसके बारे में होते हैं? ये वर्ब्स के बारे में होते हैं. हमें क्रिया कैसे यूज़ करना है. सो टू बिगिन विथ, लेट्स सी हाउ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड. प्रेजेंट टेंस में आगे 4 प्रकार के होते हैं: द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट टेंस भी आगे 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, present continuous, present perfect and the present perfect continuous. So आज के सेशन में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करना चाहिए ये हम देखेंगे. So in today's session we will only look at the simple present tense, how and where it needs to be used. So let's see. The first rule is that simple present tense must be used for एक्शंस दैट आर हैबिचुअल. कोई एक्शन जब हम हैबिट में करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, और राम टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग. सो दिस वर्ब ड्रिंक्स और टेक्स इज सिंपल प्रेजेंट. So if it is a third person singular, I will say takes or drinks. And if it is I, we, you or they, then we must use take or the first form without s. यानी अगर कोई एक्शन रेगुलर हैबिट में होता है, जैसे कि माई मदर ड्रिंक्स टी एवरी डे, सो यहाँ पे हमें टेक्स या ड्रिंक्स यूज़ करना है एंड नॉट माई मदर इज़ ड्रिंकिंग. वो गलत होगा. कोई भी हैबिट एक्शन जो रेगुलर हैबिट में होता है उसके लिए हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे. और अगर इफ़ इट इज़ फॉर आई, वी, यू और दे, वी मस्ट यूज़ ड्रिंक. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. सो मैं रोज़ सुबह दूध पीती हूँ. सो इन दिस केस, इफ़ आई एम यूजिंग अ प्रोनाउन like I or we, he, you or they, we use the first form of the verb without an s. Third person singular है. Third person singular यानी कि somebody third person and it is a singular person, then we must use add s to the verb. For example, you say bus comes on time. बिकॉज बस सिंगुलर है तो यहाँ पे हम कम की जगह हम कम्स हमें लिखना है. बस कम्स ऑन टाइम. और बट इफ इट इज़ बसेस, देन वी मस्ट यूज़ बसेस कम ऑन टाइम. सो ये हम देखते हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि बस और माई मदर और राम और ही, शी, तो वहाँ पे हम प्लेज, माई मदर प्लेज क्रिकेट और राम प्लेज क्रिकेट. सो वहाँ पे हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे. और अगर उसके जगह अगर कोई प्लूरल है या हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई, वी, यू और दे, तब हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द यूज़ करेंगे विदाउट एनी एस. और आई like chocolates. So this is for habitual actions. So the rule being, for habitual actions I must use the simple present tense. The second rule is that I should use the simple present for general truths. कोई आम सच्चाई है उसके लिए हम simple present tense ही यूज़ करेंगे. For example, the sun sets in the west, यानी कि सूरज पश्चिम की ओर डूबता है. सो ये एक आम सच्चाई है. फॉर सच सेंटेंसेस वी मस्ट यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस.
Another example could be, the sun shines brightly. That we have to use the first form of the verb, that is shine or shines, for this kind of expression. The third rule is that when we are talking about a vivid action and we are expressing a past action, when we narrate it in detail, then we use the first simple present tense. For example, if we say कोई पास्ट का एक्शन है लेकिन हम उसे प्रेजेंट में बता रहे हैं और डिटेल में बता रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहना है कोई पुराना इवेंट हमें बताना है और हम उसके प्रेजेंट में बता रहे हैं इन डिटेल, सो वी मस्ट यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, if we say the king rushes to his capital on hearing the news. So the king rushes. So rushes is the first form of the verb and it is a simple present tense. So in this case, we are using the simple present tense because it is a past action, but I am telling it in detail and therefore I will use a simple present tense. कोई past action है जिसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, तो उसके लिए हमें simple present tense ही यूज़ करना है. Okay? The next rule is when we use a sentence starting with here or there, and it's an exclamatory sentence, in such sentences we must use the simple present tense. For example, here comes the bus or there goes Ram. So in such cases simple present tense alone is used. अगर कोई exclamatory sentence है जो कि here और there से शुरू होता है, तब हमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर गोज माई फ्रेंड और हियर कम्स द प्रिंसिपल. सो इन सच केसेस वी हैव टू यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द नेक्स्ट रूल फॉर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस states that for official timetables and programs we must use the simple present tense even though it is a future time. For example, the next train leaves at 10 p.m. So even though it is a future time at night, we must use the simple present tense and say the next train leaves at 10 p.m. and not will leave. So friends, जो नेक्स्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो ये है कि अगर कोई ऑफिशियल टाइम टेबल प्रोग्राम है तो वो फ्यूचर में होने के बावजूद हमें उसे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि अगला ट्रेन रात को 10 बजे अगला ट्रेन रात को 10 बजे जाती है, तो हम क्या कहेंगे? द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स एट 10 p.m. Okay, and then we have the next rule which says that when we give present some quotations, whether in writing or speaking, then we must use the simple present. For instance, if we want to say that Gandhiji said truth is the best policy, so we will not say Gandhiji said, we must say Gandhiji says, or Abraham Lincoln says, or Dr. Abdul Kalam says, Dr. Kalam says. So in such cases, even though it is something which has already been said by the person, we must still use the simple present tense and say Gandhiji says or Dr. Kalam says. So in this way we must use the simple present tense for presenting any quotations. So दोस्तों, अगर हमें कोई quotation present करना है, चाहे वो writing में हो या speaking में हो, तो इस केस में हम past में नहीं कहेंगे. हालांकि गांधी जी ये कह चुके हैं, हमें इसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी सेज दैट Gandhiji says truth is the best policy. Okay. So students, the next rule for using the simple present tense is in clauses of time and condition. When there is a clause of time and condition and it starts with words like if, as, when, where, while, until, unless, as soon as, by the time. So if a clause starts with any of these words, we must use the simple present tense and not the future, even though the action is in the future. For example, if it rains, I will not come. So here
I will not come is a future tense, but the clause is starting with if. It is a clause of condition and time. इस रूल में ये कहा जाता है कि अगर हमें कुछ फ्यूचर टाइम के लिए बात करना है और अगर वो क्लॉज इट स्टार्ट्स विद वर्ड्स लाइक इफ, एज, until, unless, while, when, by the time, as soon as, in such clauses हमें फ्यूचर टाइम के लिए भी, फ्यूचर एक्शन के लिए भी हमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ करना है. ओके, फॉलोइंग दिस द नेक्स्ट रूल इज़ अबाउट ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज. अगला रूल जो है ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज के बारे में है, स्पोर्टिंग कमेंट्रीज के बारे में है. हम सुनते हैं अक्सर इन कमेंट्रीज दैट द एक्शन इज एक्चुअली गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रेट प्लेयर इज bowling, but we will use not in continuous action because the action is actually happening, but we must use in simple present tense. For example, we can say, Virat takes a catch. So it is not taking a catch, he takes the catch. Or, Dhoni bowls. So friends, इस रूल में जब हम कोई क्रिकेटिंग कमेंट्री या स्पोर्टिंग कमेंट्री हम सुनते हैं और हमें कमेंट्री करना है स्पोर्ट्स के बारे में, यद्यपि वो एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस टेंस में है, हम उसे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे. ओके, द फाइनल रूल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अबाउट वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, appearing, emotion, thinking, and possession. In these types of words, we need to use the simple present only. For example, verbs of perception, that means like see, hear, smell, notice, and recognize. So, कुछ verbs हैं जिनके लिए हम सिर्फ simple present tense use करेंगे. For example, verbs of perception, like you will often see or we hear these statements, I hear the bell ringing. So in that case, though it is a continuous action, I'm hearing, but we must use I hear the bell ringing. Similarly, words of appearing. For example, you look tired. So even though he or she is looking tired, we must just say you look tired. So these verbs of appearing are appear, look, and see. Friends, अगर कोई verbs of appearing है, जैसे कि see, look, appear, इनके लिए हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. नेक्स्ट इज वर्ब्स ऑफ इमोशन. इमोशन मीनिंग लाइक want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, and and prefer. So for these verbs also we will use only the simple present. For example, I wish to have a phone. Next is the verbs of thinking. For example, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, and mind. So for example, we can say, I think it's going to rain. So I think is a simple present. Even though the action is continuous, I will say I think. And the next is verbs of possession or have. For example, be a possession or say, consist of. So these verbs, we will always use simple present. For example, I have a car. I cannot say I'm having a car. That's incorrect. So we need to say I have a car or I own a car. So students, we have seen different rules of how and when we need to use simple present tense. आज हमने देखा simple present tense किन किन conditions में किन किन जगह use होता है. So if you have any doubts on this about simple present tense, you can contact me and write to me on my email address given below. And till then, keep practicing. Thank you.